अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम वसल्लम और उनकी आल पर। तो जी दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे इस वीडियो के टाइटल से कि कैसे तुर्किश लोगों या तुर्किश के कुछ लोगों ने यहाँ पे गोरे को लूटा और उसके साथ मिसबिहेव किया। तो आप उनका सुनते हैं इंटरव्यू और उसके बाद व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और लास्ट पे फिर मैं आपको बताता हूँ इसकी क्या वजूहात थी और ये कैसे हुआ और इससे कैसे बचा जा सकता है। Travel with Ameer. Hello, Mr. Handsome. How are you? Niall is my name. What's your name again? Sorry? Hamza. Hamza. Yes, how are you, sir? I'm very well, thank you. I've been treated very well by the good people of Istanbul. Yes. And Yeah. So, Mr. Nail, I have a question. What brings you here? I was here for dental treatment, but I've had fake allegations made against me by a neighbour, and the Metropolitan Police just assumed that the man was in the wrong, and they've been down at my bedroom window 3 times, sticking their head in my bedroom window. I don't believe they could do that to anybody really, and that's a human rights invasion of privacy. And so it's not the first time, but they're getting heavy. And I put in a counter allegation of perjury against this lady who has a mental health condition. I do too. So it should have been thrown out. But yes, I felt persecuted due to fake allegations. Okay. So, how many in your families, siblings? Sorry. How many are you in families? I'm not with you. Are you living with your family? My son is my family. He's 11. Okay, where he's living? He's with his mum over in London, but they're back in Czech an awful lot, and I wish to go for custody of my son. Okay. So I'll only be in Turkey for a few months. Okay. So, what is your next plan, brother? We are just trying to help you. Yeah. As you see, we are looking for some place to live until you don't bear your expenses. So we are doing something for you. Yes, as thank long. you, So thank you. yeah. So what do you think? What's your plan? What's you when you gonna go back, or what's you next you going to do? Well, England, London. I have a mental health condition, post-traumatic stress disorder. Okay. That's the only one I'd agree with. They've said about 10 things, Okay. but my next plan is the immediate plan is to cut ties with England. I have a government property in England. It took me 2 years to get. I think I've secured it the amount of times I've been harassed by the police and the media as well. In fairness, it wasn't always the police. The British press. I was in the British press illegally So as a child. what is the main reason I would like to ask you to makes you this in serious position or in this conditions? What makes you involved in this condition, sir? Well, it's not so much of a big issue, but I just want to cut ties with England and move to Turkey. Usually it's the other way around, but Okay. no, I'm amazed. My plan eventually, 3 or 4 months down the lane, is to move back to the Ulster region of Ireland, Okay. where I intend to carry on a political project I'm doing, and where I intend to raise my son. Okay. So now you're going back to England, London, Britain, or to your son? I have to be back at the police station on March the 25th Okay. to see if they're going to press charges with this unwell woman. She's made an allegation of harassment and stalking. It wasn't me. I don't know if I didn't harass her, but I didn't stalk her. I wrote her a few letters, and I might have been Okay. cheeky or something. But the Okay. police totally OTT'd over the top. When I was 17, I was arrested under prevention of terrorism. 3 years after the IRA existed, and the Metropolitan Police, instead of saying sorry child, they said lack of evidence,
and this has led to strip searches at airports. This has led to very serious problems. I'm not, and the check. I'm not. It has to be on a government level because I've complained to MPs and consulates in Czech of my treatment while detained. I didn't stick to access time by a few hours when my son was very small. Um, and How old he is? he's 11 now, but when he was 1 year old, when he was 8 months old, I didn't stick to access time, and the police get the Czech authorities, because it's kind of a very bureaucratic police state. They gave me like Al Qaeda status. 2 months of my own, 2 months of my own cell. Okay. So So I yeah, thought, we get your point. So we will try to upload your video on our channels, and let's see what the people and what the government will take action on it. Okay. So hope for the good. We'll try Can our I say best. one more thing? Yes. I've made an application. Fraud. My son is having a paternity fraud committed on him, and if a crime is so serious as fraud, it's now a syndicate. The amount of silly idiots drink it. His mum is going out with hooligans and. Hope the concerned people will see your video. I've made an application for about 17 European arrest warrants for these people taking liberties with my son. So I hope to get it, but it's a long time. Yeah. Hope the concerned people will see and look this video, Yeah. and they will come back to you. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. So as you guys see, we are just doing something. So we are looking for some shelter or place for the Mr. Nail, so he can sleep and he can stay there. So hope for the good, इंशाल्लाह। तो जी दोस्तों, ये थे मिस्टर नेल। इनका इंटरव्यू आपने सुना होगा, और जिनको इनकी थोड़ी बात समझ में नहीं आई तो मैं उनको एक्सप्लेन करता जाऊँ। तो ये आए थे आयरलैंड से बेसिकली यहाँ पे अपना टीथ का ट्रीटमेंट करने के लिए, दांतों का ट्रीटमेंट करने के लिए। और इनके साथ हुआ क्या कि जिस होटल में ये ठहरे हुए थे, वहाँ के जो नॉर्मली ये कोशिश लोग करते हैं जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको, कि कोई सस्ता सा होटल, कोई चीप होटल देखा जाए। तो यहाँ पे गलियों में काफ़ी एक अंदर करके होटल्स होते हैं तुर्की में, तो जो बेसिकली सेफ़ तो नहीं होते, लेकिन लोग सस्ता देख के तो कोशिश करते हैं यहाँ पे टाइम गुजारा जाए। तो उसमें ये हुआ कि ये वहाँ पे ठहरा, और वहाँ पे इसकी चीज़ें कुछ गायब हुई। वहाँ पे लॉकर नहीं होता कुछ भी, और वहाँ से इनकी कुछ चीज़ें गायब हुई। उसके बाद इसके पर्स था, वो उसमें से डॉक्यूमेंट्स सारे वगैरह वहाँ से गायब हो गए, और जो पैसे थे वो भी उन्होंने, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब इनसे जो है ना वहाँ पे मिसहैप हुआ। तो ये बेचारा फिर जो है ना यहाँ पे आता हमारे रेस्टोरेंट के पास से गुज़रा, और जब हमने इससे पूछा कि हेलो हाय की, इसने बताया कि मेरे साथ ये मिसहैप हो गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके पास इसका एक छोटा बैग और पासपोर्ट बचा था। बाकी जो चीज़ें हैं जो है ना उनने ले ली, और बेचारे के पास ना पैसे और ना कुछ। फिर मैंने और हमारा एक दोस्त है यहाँ पे, तो उन्होंने यहाँ पे फिर यहाँ जैसे एनजीओज़ वगैरह होती हैं हर कंट्रीज़ में जो लुक आफ्टर करती हैं, शेल्टर्स वगैरह मुहैया करती हैं। तो फिर हमने यहाँ पे एक जो है ना एक शेल्टर ढूंढा, मैं वीडियो में जैसे आपने देखा होगा। तो फिर उनसे हमने बात की, उनसे बात करके तो उनको पूछा कि क्या आपके पास ये फैसिलिटी है कि कोई फॉरेनर ऐसे आपके पास रुक सकता है। तो फिर बड़ी तगदों के बाद उन्होंने हामी भरी, और फिर उन्होंने बोला एज पूछी। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कहाँ का रहायशी है, वो सारी डिटेल पूछने के बाद फिर उन्होंने बोला जी चलें ओके। तो यहाँ पे एक शफ़क़त दायरे के नाम से एक यहाँ से तकसीम स्क्वायर से 10-15 मिनट के रास्ते पे है। तो रात को फिर हमने उनके साथ गए, टैक्सी पे उनको छोड़ा, और क्या कहते हैं फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने उनकी काफ़ी लुक आफ्टर की, घर किया उनने। उसके बाद उनको जनाब खाना मुहैया किया, और उसके बाद फिर आज मॉर्निंग में फिर वो अपने एम्बेसी गए, उनसे रब्ता वगैरह किया। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो लोग थोड़े बहुत पैसे बचाने के लिए, बेसिकली अगर टूरिस्ट पे आए हैं, टूरिज़म पर्पज़ के लिए आए हैं, तो इन चीज़ों को नहीं देखें, अपनी सेफ्टी पहले देखें। आप दियारे गैर में होते हैं, आपका टाइम ऐसा होता है, सम टाइम वीकेंड होता है, एम्बेसीज़ क्लोज़ होती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो